हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ PostgreSQL Masterclass। और इस बार हम लाइक ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लाइक ऑपरेटर हमें क्या करता है कि वी कैन इन आवर रिजल्ट सेट वी कैन क्वेरी डेटा बेस्ड ऑन पैटर्न्स। सो लेट्स इमेजिन वी हैव a query like this. Select first name last name from customer and where first name like Zen, right? So हुआ क्या यहाँ पे कि हमारा जो फर्स्ट नेम है, राइट, इस कॉलम में अगर if we have an entry like ZEN and then if we have one or more characters that are after ZEN, then it will filter those rows and we will be able to see those rows in our result set, right? तो Zen स्टार का मतलब Zen मोड का मतलब है कि एक पैटर्न है, राइट? तो ये क्वेरी वो रोज को रिटर्न करेगा जिनकी वैल्यूज फर्स्ट कॉलम में दे आर बिगिनिंग विद Zen and are followed by any such sequence of characters. So this technique is what we call as pattern matching, right? तो ये पैटर्न मैचिंग हम SQL में भी where clause के साथ यूज कर सकते हैं। अब मॉड का मतलब क्या है कि मोड का मतलब ये होता है कि या तो जीरो कैरेक्टर्स या मोर कैरेक्टर्स, राइट? तो इसमें हमने सर ZEN मॉड लिखा था, तो ZEN के बाद अगर जीरो कैरेक्टर्स या फिर मोर कैरेक्टर्स है तो इट विल मैच ऑल दो सच एंट्रीज इन द कॉलम और वो सारे रोज हमारे पास फिल्टर होकर आ जाएंगे। अगर हम डैश यूज करें तो डैश का मतलब होता है कि इट मैचेस एग्जैक्टली वन सिंगल कैरेक्टर। एंड इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स लुक्स लाइक दिस: value like pattern where value is a column and like here, and then pattern is like just we saw, right? How does it look like? And value not like pattern, so if the values in those column doesn't match that pattern, तो हमारे पास वो सारे rows आ जाएंगे। तो if we see this, it's actually like कि we are basically seeing कि in this way what we are doing, we are writing select apple like apple as a result, right? So this apple is checking that the pattern is matching as apple. In this case, it will match because it is all the same. So in this case, we will get true. So that's why we are saying that it behaves as an equal to operator. When we say like this, right, select apple like is mod as result. So what's happening here is that the entry is, or the one of the values in the column is like an apple, right? And then A star, मतलब कि A से शुरू होने वाले और उसके बाद zero or more characters. Does this hold value for this entry apple? It does, right? तो इस केस में ये 2 आएगा। इसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो I have already written this query, so let's write it once. So select apple and then like A mod and then that matches as result, right? So this will return true because apple is actually, it's matching this pattern where the first character is A in this and there is like 0 more characters here, right? So PPLE, there are 4 characters, so it's matching the mod thing. So now we'll run some queries on our customer table. So our customer table from our DB Rectal database has these columns, customer ID, student in, so and so forth. तो इसमें हमने कुछ कॉलम कुछ लाइक के थ्रू कुछ फिल्टर लगा के देखते हैं, राइट? तो हमारे पास पहली क्वेरी हमारी यहाँ एग्जांपल्स में कि जहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नेम है, राइट, तो फर्स्ट नेम हैज दिस मॉड मॉड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे names जो कि start हो रहे हैं with any number of characters, then it has ER and it ends with any number of characters. So if that first name exists, then वो रो हमारे पास आ जाएंगे। इस क्वेरी को हम रन करके देख लेते हैं। So what we'll do, select and then we have first name, right, and then last name, and then from customer, and where we are saying first name, last name like non ecar what, and then we doing order by first name, right? So if you remember the order of execution, सबसे पहले हमारा from होता है, फिर where, फिर select and then order by, right? तो like is like a filtering thing that we are using it where. तो इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास वो सारे आ जाएंगे जहाँ पे जैसे Albert है, right? So Albert में there are 3 characters that are starting that will match this pattern because ER है हमारे पास, राइट? तो ER के बाद 0 more characters है और ER के पहले more characters है। Similarly for other first names also they are like this, like for Bernard, right? For Bernard, if you see B is there, then ER and then 0 more characters and then 0 more characters के पहले भी है। This is one example. In this example, what's happening is कि we are saying कि first name like it should match exactly one character and then it has HER and then 0 more characters. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। So I'll just change it to dash and then HER. So if we run this query again, so what will happen? We have only those first name जिसमें एक कैरेक्टर पहले, तो यहाँ पे C है
राइट, एंड देन HER, सो CHER एंड देन 0 और मोर कैरेक्टर्स. तो ये वाली रो हमारे पास आ गई. तो ये दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग dash and more together with like for querying certain rows, right? And here we are using not like, and then then you should, the first name should start with ZEN and then have 0 more characters, right? And then we are using not like, so all those things that are other than this will be filtered और वो हमारे सेट में आ जाएगा. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे. So this will be JEN and then not like, right? तो इस क्वेरी को अगर रन करेंगे तो हमारे पास वो सारे आ गए जो ये पैटर्न को मैच नहीं कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट वी गेट. एंड आई लाइक करके भी होता है. तो आई लाइक का मतलब ये होता है कि लाइक में जो हम कर रहे हैं ना, तो दिस एग्जैक्टली मैचेस द केसिंग ऑफ दोज कैरेक्टर्स, राइट? आई लाइक में ऐसा नहीं होता. आई लाइक में अगर आपने BAR लिखा है तो इवन स्मॉल b स्मॉल a और स्मॉल r और इवन बिग B स्मॉल a स्मॉल r, all those things will also match. So if I write like this, select first name last name from customer, where first name I like, right? And then we put just capital BAR, right? तो अपन ये कर लेते हैं, बस फिर इसको रन करते हैं. तो हमारे पास वो सारे आगे. See, even though this BAR is it like first is capital and then we have the smaller case, even though it is there, it is matching this. If I do this like, then I think मेरे पास अभी कोई भी रिजल्ट सेट में नहीं आना चाहिए, right? Because it matches the exact casing of those characters in case of like I like के केस में इवन डिफरेंट केसिंग कैरेक्टर्स का भी डेटा हमारे पास आ जाता है, राइट? सो इवन ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन एक्सेप्ट ऑफ लाइक. सो अगर ऐसे टिल्डे यूज करेंगे तो इट इज सिमिलर टू लाइक. if we have tilde and star, it's like I like, and then not tilde, so it is like not like, and then so on and so forth. So like basically it's saying कि like के अलावा हम ऐसे ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, right? तो if I do the same thing ना यहाँ पे like I said for I like, it's I like के लिए होता है tilde और star, right? So it behaves the same as I like only. So if I run this, see I got the same outcome. So you can use operators also if you don't want to write like or I like. It's generally like or I like, or not like or not I like. ज़्यादा specific होता है when you write in terms of queries using these things, right? Now the last one is the escape thing. So for example, we know, right, कि dash और underscore हमने use किया for saying the pattern about pattern, right? Sometimes it may so happen you want to search for those pattern as well. Like यहाँ पे अगर मेरे को 10% वाला चीज़ सर्च करना था तो मैं चाहता था कि यार ये जो मेरा मर्ड है किसी तरीके से एस्केप हो जाए, तो हम ये अपनी क्वेरीज में बता सकते हैं. तो फॉर दिस व्हाट विल डू, आई हैव सम क्वेरीज प्रिपेयर्ड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल एंड देन इंसर्टिंग सम डेटा इनटू इट. इसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है, हम जल्दी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं और हम इसको रन कर लेते हैं. तो ये क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहा है, उसमें एक कॉलम मैसेज है जिसका टाइप टेक्स्ट है और उसमें हम ये दो वैल्यूज एंटर कर रहे हैं. एक है कि द रेंट्स आर नाउ 10% हायर देन लास्ट मंथ एंड द न्यू फिल्म विल हैव underscore in the title. So let me just create this one, right? And then what I'll do, I'll just query run this table to see कि इसमें कौन सी वैल्यू है, right? तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा है. तो इसमें एक मैसेज का कॉलम है और ये सारा उसमें एंट्रीज, राइट? सो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को ये सर्च करना है कि यहाँ पे 10% मैंने सेंटेंस से सर्च कर. तो कैसे करेंगे, तो यू वांट सेलेक्ट % from T where message like, right? So mod, if you put mod here, it means like a 0 more characters before, and then we have 10, right? So this will search this. Now I want it specifically कि भाई तू 10% ही search कर. तो होगा क्या कि ये if you are putting in this $sign just before this %, right? And then we are saying कि the escape character here is my $. तो होगा क्या कि ये जो $, है, राइट, ये वी आर सेइंग दैट एस्केप $. तो ये $, जो है यहाँ पे दिस विल एस्केप द नेक्स्ट कैरेक्टर. तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या सर्च करेगा, 0 और मोर कैरेक्टर्स एंड देन वी हैव डू वी हैव अ 10% और नॉट, राइट? एंड देन वी हैव अनदर मॉड्यूलो साइन हियर टू सेइंग दैट कि 10% before that 0 more characters, after that 0 more characters. So if we do this, then we should get the first entry of this one. So let's run this. So yeah, we are getting this, right? कि हमें 10% we are able to search it. So that this is where the escape can be useful कि जब हमें डैश के बारे में, डैश अगर सर्च करना है, राइट,
या फिर परसेंट अगर सर्च करना है इन सेंटेंस, तो इन दीज केसेस एस्केप कैन बी यूजफुल. So this was about like operator using with where to query data based on patterns. So I hope you guys like it. I will meet in the next one. Bye.